Okay, keep the heading. Torque on a bar magnet in a uniform magnetic field. Torque on a bar magnet in uniform magnetic field. అంటే यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इफ आई पुट ए बार मैग्नेट देन इसके ऊपर टॉर्क लगेगा. टॉर्क कितना है? ओके चलो. टॉर्क ऑन ए बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. सपोज मान लो दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड. ओके. इन दैट में बार मैग्नेट आई प्लेस्ड व्हिच इज साउथ पोल नॉर्थ पोल सेपरेट बाय डिस्टेंस 12. मतलब इधर एल है, ये भी एल है. ओके. इसके ऊपर फोर्स लगेगा. सी यू कंपेयर विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. टेल मी, याद है वाला व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ ए प्लेट प्लस क्यू चार्ज, इसके ऊपर फोर्स लगेगा. कितना फोर्स लगेगा? QE. QE इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड माइनस क्यू चार्ज है तो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा QE. सेम वे हियर प्लस क्यू के वजह से मीन्स नथिंग बट नॉर्थ पोल. नॉर्थ पोल के उसका पोर्शन एम है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा? इंस्टेड ऑफ क्यू वी विल गेट एम, इंस्टेड ऑफ ई वी विल गेट बी. एम बी इज अ फॉर्मूला. एंड इधर कितना है? एम बी. राइट. नाउ इसका वजह से क्या होगा? देयर इज अ नेट फोर्स इज हाउ मच? नेट फोर्स इज हाउ मच? बार मैट के ऊपर दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स आर एक्टिंग, राइट? सो नेट फोर्स इज 0. net force is equal to 0. टू इक्वल एंड ऑपोजिट एम बी मैग्नेटिक फील्ड में बार मैट रखा. टोटल बार मैट का कहानी वाली वी आर सीइंग दैट्स व्हाई मैग्नेटिज्म मैटर. ओके. हां. नाउ टॉर्क, टेल मी, टॉर्क विल एक्ट और नॉट? देखो, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस डज नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन. देखो आई टोल्ड यू ऑन दैट डे लाइन ऑफ एक्शन मींस ऐसा. ओके. ये ऐसा है, दे डोंट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन. ओके. ये ऊपर है, ये ऐसा है, इसका एक्शन ये वाला, इसका एक्शन ये वाला. सो डज नॉट हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन, देयरफॉर देयर इज अ टॉर्क. टॉर्क की वजह से घूमेगा. ओके. नाउ इस फोर्स की वजह से अबाउट दिस एक्सिस पॉइंट में इट विल रोटेट इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. ये पेन है, ये पुश कर रहा हूं ऐसा ऐसा पुश करो. सो इट विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. द बार मैट Clockwise. क्लॉकवाइज. देखो, इस फोर्स वांट द बार मैट टू रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये टाउ 1 बोलते हो. नाउ ये फोर्स क्या करेगा? ये फोर्स ऐसे पुश कर रहा है, तो इट इज मेकिंग द बार मैट टू रोटेट इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज. अबाउट दिस पॉइंट it is also Yes. clockwise. Tau 2, because tau is a torque is a vector quantity, that's why we are seeing direction. Since both having the same direction, the net torque will be how much? Tau 1 plus tau 2, right? Addition करने का. So torque का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. याद है? व्हाट इज दिस? अ फोर्स, उसको एक्सटेंड करो. Perpendicular distance always we have to calculate about the axis of rotation. This is the perpendicular distance. Tell me this length is how much? This is L. L and L, right? Tell me L का इस तरफ component is L cos theta. This will be L sin theta. So what is the torque? Torque means torque formula क्या है? Force into perpendicular distance always. So force कितना है? mb into perpendicular distance. Perpendicular distance कितना है? L sin theta. हाँ, टॉर्क 2 को बोलो कितना आएगा? फोर्स if extend backwards, the perpendicular distance is this one. So L cos, tell me L का, this is theta, this also theta, right? ये भी theta. tell me, हाँ, this is also theta, vertical opposite angle. tell me इसका L cos theta, L sin theta. समझ में आया? L cos theta, L sin theta. So this is L sin theta. From perpendicular distance we will calculate. Okay, force and perpendicular distance. So क्या होगा? MB is a force and L sin theta. So दोनों सेम है. That's why 2MBL sin theta. Okay. Here one formula आपको दिख रहा है, M into 2L. इसको क्या बोलते हैं? M into 2L को Magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट. M कैपिटल M लगाऊंगा and B is B sin theta. So
टॉर्क का फॉर्मूला इज m क्रॉस b और एम बी साइन थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉर्मूला, व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड में, व्हाट इज द फॉर्मूला? कंपैरिजन से यू कैन टेल. P क्रॉस E, P क्रॉस E इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. दैट्स व्हाई द एनालॉजी में वी आर डूइंग. So magnetism का formulas are so easy because since we learned electrostatics, electrostatic comparison में देखो P के जगह में M आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह में मैग्नेटिक फील्ड आएगा. एनालॉजी बोल के लास्ट टॉपिक है स्वयं, और लास्ट क्लास में भी डन. एक बार फिर से देख लो एक बार. ओके, एम बी साइन थीटा इज अ फॉर्मूला फॉर टॉर्क. ओके, नाउ टेल मी मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मिनिमम टॉर्क कब होगा इसका? व्हेन एंगल इज हाउ मच मैक्सिमम टॉर्क? टेल मी. एम बी 90. सेंटर राइट. हाँ, कितना? 90. हाँ. So when theta is 90 degrees, so torque maximum is mb. And minimum torque कब होगा? When theta is 0 degrees or theta is 180 degrees. So torque कितना होगा? It is mb sin 0 is 0, sin 180 is also 0. So minimum torque is 0. And इधर भी minimum torque 0 है. But this condition is called as stable equilibrium. 0 degrees is always stable equilibrium. एंड ये वाला क्या बोलते हैं? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ओके, मतलब इफ यू सी द डायग्राम में थीटा 0 डिग्रीज मींस किसके बीच में? थीटा मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच में रहेगा. सो आपको डायग्राम में इफ सी देखो, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड बार मैट कैसे रखने का? सच वे दैट मैग्नेटिक मूवमेंट should be same direction of that of magnetic field. That means this south, this north. इसका magnetic movement direction देखो, south to north, right? A theta is 0 degrees. If theta is 180 बोले तो क्या करने का? Simply इसको reverse करो. So magnetic field में I am putting a bar magnet from south to north here. From south to north direction only magnetic movement will be there. Now angle is how much? 180. Magnetic movement and magnetic field का angle is 180 degrees. So इसको anti parallel बोलते हैं. तो टॉर्क का फॉर्मूला इज m क्रॉस b, m क्रॉस b और mb sin थीटा. कपड़े चलो एकदम करेंगे. The pole strength of the bar mat, small m value is given. Pole strength of bar mat is this much, and distance between the poles is 25 centimeters. Okay, so bar mat है साउथ पोल, नॉर्थ पोल. इसका पोल स्ट्रेंथ m, इसका पोल स्ट्रेंथ m. Okay, distance is 25 centimeters. All converted into meters. And pole strength value is 48 ampere meter. Find the magnetic moment of the bar mat. Easy question. Find the magnetic moment. Capital M find करेंगे. फॉर्मूला क्या है? कैपिटल M, M into pole strength into distance between them, 12. 12 is only 25. Again, don't multiply 2 into, okay? SI units should be there. M into 12. So 12. 12 units क्या है? Ampere. Yeah. Because pole strength is ampere meter, right? Ampere meter square. No, second one. What torque is required to hold the magnet at an angle 30 degrees with the uniform field? This much. Suppose magnetic field में I am putting the bar magnet. South pole, north pole at an angle 30 degrees. Okay. So definitely
इसके ऊपर फोर्स लगेगा, वो एम बी, इसका पोर्शन एम एंड एम वाला, एंड इधर पोर्शन एम बी, राइट। फोर्स लगेगा, वो टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्लॉकवाइज घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा बार मैट अभी रखने से, क्या होगा? इट इज रोटेट्स क्लॉकवाइज। ओके, नो क्या बोल रहे हो? व्हाट टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू होल्ड दिस मैग्नेट? होल्ड करने का मतलब यू हैव टू अप्लाई एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज? इसको बार मैट को रुकने के लिए एंटी क्लॉकवाइज रखना पड़ेगा। सो आंसर आने के बाद, टॉर्क आने के बाद माइनस लगाने का, दैट्स इट। दैट इज ऑप्शंस में रहेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बोल के। तो टॉर्क फाइंड करो इन दिस का। So -0.9. माइनस, अरे आ गया इधर, देखता क्या किधर आ गया आपका आंसर? Did किधर कैलकुलेट किया क्या this one? it? हाँ, सो फॉर्मूला इज एम बी साइन थीटा। आप भी कैलकुलेट करो, शिवेंगे। साइन थीटा, -0.9. अरे क्यों, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है क्या? आंसर आ गया, हाँ। ओके, सो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आंसर? आंसर इज Clockwise. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो ऑप्शंस में दे गिवन 0.9 क्लॉकवाइज, 0.9 एंटी क्लॉकवाइज बोल के, ये वाला समझ में आया? श्रीराम, क्लास नहीं आए तो एक बार ऐसे रहेगा, काम में बैठना पड़ेगा। ओके, m into 12 is the formula for magnetic moment into b into sin, that is 1/2. So substitute करो all values here. 12 is given this same distance, right? 25 centimeters, वो यूज करो, will get the answer. Okay, और मैग्नेटिक मोमेंट तो आ गया ना, आपको टेंशन है, डायरेक्टली सब्सिट्यूट कर लो। ओके, वो मैग्नेटिक मोमेंट आया ना, डायरेक्टली सब्सिट्यूट करता आ जाएगा। ओके, चलो ना करो, डायग्राम ड्रॉ करो, अंडरस्टैंड करो, सॉल्व करो। A bar mat with the poles 25 centimeters apart and pole strength is given, rest at the center on a frictionless pivot. Okay, uh, it is held equilibrium at 60 degrees with the uniform field of induction this much by applying a force F right angles to the axis. Okay, chalo. A bar mat 25 centimeters rest on a center of frictionless table. Okay, at angle 60 degrees. A pivoted bar mat, bar magnetic field is like this. Okay. It is held equilibrium 60 degrees with the uniform magnetic field. So it is 60 degrees में uniform magnetic field में it is held equilibrium. Okay. मतलब if I don't put this one, if I don't if I leave like this only, there is a force acting, इसका वजह से MB एंड इसका वजह से MB, तो इसका वजह से रोटेट होगा ना, रोटेट हो जाएगा। बट वी आर पुटिंग द इक्विलिब्रियम, कैसा इक्विलिब्रियम लगा रहा है? by applying a uniform magnetic field by induction this much, by applying a force F at right angles to the axis 12 centimeters from the pivot point. देखो, this total centimeters is how much? 25. मतलब this will be how much? This will be how much? This will be how much? 12.5, 12.5, right? But I am applying a force F at 90 degrees right angles to 12 centimeters from the pivoted point. Okay, तो मैं क्या करूंगा, pivoted point से 12 centimeters दूर में definitely I am applying like this force, then only the magnet will stop, otherwise the magnet will rotate. It is holding, समझ में आ रहा है? We are making this equilibrium by applying a force like this in the opposite direction to that of torque. Okay, this is 12 centimeters. तो सिंपली क्या करने का आपको, clockwise torque is equal to anti clockwise torque इक्वेट करो। In that condition में is telling to find what? The value of F is how much? Okay, and anti-clockwise torque कैसा आएगा? Anti-clockwise torque is how much? Force into perpendicular distance is called torque, right? Force into perpendicular, हाँ equate करो। Clockwise torque is equal to, because net torque is 0, then only equilibrium. Clockwise torque is equal to anti-clockwise torque. Equate.
How much? Clockwise torque is equal to anti-clockwise torque. A clockwise torque, anti-clockwise torque is nothing but force into perpendicular distance. Force into perpendicular distance. And this one MB sanita. No solve. F find करो. So is the answer approximately 6? Point कितना है? So I need to calculate. हाँ find करो. M, you know, M formula is small pole strength into 12 into B into sine theta. Sine 60 is root 3 by 2. Equal to force into perpendicular distance. Force into perpendicular distance is 12 centimeters, right? 12 by 100. No, find karo. 12 is nothing but 25 centimeters. So 25 by 100, right? So pole strength is how much? 14.4. कितना है? साथ कितना है आपको? 25 by 100 into B is how much? Tesla 0.25. So 25 by 100. That's right. So Into root 6.19. 6.5 is approximately. So answer from this F is equal to 6.5 newtons. मतलब इतना फोर्स में लगाऊंगा then the anti-clockwise torque is always equal clockwise and at that time the bar mat is in equilibrium. So देखो क्वेश्चंस कैसा आ रहा है. चलो this is analogy. You remember the dipole placed in a uniform electric field में potential energy when I rotate the dipole from one position to other position. What is the potential energy formula? First chapter में dipole. We'll see comparison में. चलो keep reading. Potential energy of a bar magnet in a uniform magnetic field. Potential energy of a bar magnet when placed in uniform magnetic field. चलो. So we are trying to calculate potential energy. So क्या होगा? Suppose मान लो you have magnetic field. See potential energy. I told you single एक potential energy is actually not defined. Always change in potential energy is defined. आपको क्या करने का? Always we are trying to calculate in starting gravitation से. Always we are trying to calculate the change in potential energy and certain assumption करके एक potential energy को zero कर रहे हैं. The potential energy we can get from that always. In every time potential energy में change in potential energy we will calculate. Okay. So suppose मान लो there is a bar magnet. South pole, north pole at an angle of theta 1. Okay. Now bar magnet को मैं certain rotate किया, certain angle rotate किया. Okay. I took a bar magnet and I rotated certain angle theta. Okay. ये axis से कितना angle है? This is theta 2. South pole, north pole. I want to calculate the change in potential energy. Initially it is at theta 1. I rotated the bar mat. पूरा कहानी पूरा bar mat only. I rotated theta 1 to theta 2. At that time, what is the change in potential energy we want to calculate? We know that work done is equal to change in potential energy. मतलब U of final, मतलब U of theta 2 minus U of initially theta 1. मतलब work find करेंगे, then we can get the change in potential energy. एक certain assumption करके we will try to calculate the potential energy. Okay. Torque formula is how much? Torque formula is when a bar man is rotated at certain angle theta. What is the formula? Torque of MB hello, sin theta. Theta पर depend हो रहा है ना? Whether this is a torque is variable or constant when I rotate from theta 1 to theta 2. Torque is varying, right? Because theta is varying, torque is varying. That's why work done का formula कैसा आएगा?
वर्क डन का फॉर्मूला, सिंस इट इज ए वेरिएबल फोर्स वी हैव टू डू इंटीग्रेशन का. व्हाट इज द फॉर्मूला? इंटीग्रल थीटा 1 to theta 2. What is the formula? Tau dot theta. Tau dot theta. Right? Since it's variable work done ka, we studied in first year also. Constant work done F dot S. Variable force means integral F dot ds. I say. In rotational mein, tau dot ds के जगह में d theta. Okay. Now, torque and displacement are in the same direction. Angle is 0. Cos 0 is 1. So tau d theta लगा रहा. So tau का formula क्या है? Theta 1 to theta 2. MB sin theta d theta. Is it work done? So MB is constant. Integration of sin theta is how much? Integration of sin theta is कितना? Theta. Negative cos. Minus cos theta. Minus cos theta. From theta 1 to theta 2. Implies work done is equal to minus MB cos upper limit minus lower limit. Cos theta 2 minus. ये सब कुछ हम लोग even we done in dipole के वजह से. These all things same thing. Okay. Now I can replace this with the change in potential energy. So u of theta 2 minus u of theta 1 is equal to minus mb cos theta 2 minus cos theta 1. We got change in potential energy. But now we don't want change in potential energy. एक assumption करना पड़ेगा. वो assumption क्या है? Let a copy right? मान लो इनिशियली थीटा, assumption क्या है? When theta 1 as 90 degrees and potential energy at that 90 degrees is 0. तो मतलब क्या है? Suppose मान लो initially the theta 1 is starting from 90 degrees. Okay. At that position में the potential energy 0 बोल के assumption कर रहा है. Okay. Now substitute wherever theta 1 is there 90 लगाओ. theta 1 करें u of 90 is how much? 0. अब 0 हो जाएगा. Right? Then क्या आएगा? u of theta 2 is how much? And cos 90 is 0. अब 0 हो जाएगा. So क्या आया? Minus mb cos theta 2. Now theta 2 I am removing, I am replacing with general angle theta. Theta 2 को जगह में theta लगा रहा हूँ. U of any angle theta is minus mb cos theta, that is equal to minus m dot b. I told you torque का फॉर्मूला है m cross b. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है m dot b इनपुट माइनस. ये डॉट है और क्रॉस है, तो माइनस m dot b. सो आपको रिमेंबर करने का ऑलवेज इट एनी एंगल थीटा, इट कैन बी 30 डिग्रीज 60 डिग्रीज 90 डिग्रीज, एनी एंगल थीटा में आपको पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला इज माइनस m dot b. एंड व्हेनेवर पोटेंशियल एनर्जी कांसेप्ट कम्स दे आस्क वर्क डन. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ये दोनों रिमूव करते क्वेश्चंस यू कैन सॉल्व. वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. ओके बेटा. ओके नाउ इसमें इक्विलिब्रियम का बोलो, स्टेबल एंड अनस्टेबल वाला. टेल में स्टेबल कैसा होगा, अनस्टेबल क्या होगा? एंगल कितना है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्रीज. क्या आएगा? Stable equilibrium. u is minus mb cos theta. Cos 0 is how much? 1. So it is u is minus mb. ये मिनिमम हो मैक्सिमम हो? माइनस है ना, नेगेटिव है ना, सो मिनिमम. So whenever potential is minimum, it is called stable equilibrium. Okay. And theta is 180 degrees. Cos 180 is minus 1. So minus of minus plus हो जाएगा. So u max is mb आएगा, plus mb, right? So this is the maximum. Maximum will be always unstable equilibrium. Unstable equilibrium. So certain times they will tell they move the bar magnet from stable to unstable equilibrium. मतलब angle is how much? 0 to 180. So theta 1 to theta 2. So वो लगाने का फॉर्मूला. Okay, W is equal to change in potential energy. We'll tell to calculate work done.
है ना? एक क्वेश्चन करो, और ये ऑप्शंस ट्राई. Calculate the work done in rotating the bar magnet of उसका magnetic moment at angle 60 degrees from the position along the magnetic field. So along the मतलब 0 डिग्री से 60 डिग्री मूव करने के लिए he is telling to calculate the work done. Initially 0 degrees में है, I moved through 60 degrees. He is telling to calculate work done. And you know the formula, work done is equal to change in potential energy. मतलब u of theta 2 minus u of theta 1. Theta 1 is 0 degrees, theta 2 is 60. Use separately formula and then subtract. So 5.1 into 10 power minus 5. 5.1 and 10 power minus 5 is correct. Yeah. So u of theta 2 is 60 minus u of theta 1. Theta 1 is 0 degrees. So u of theta formula क्या है? Minus mb cos theta. कितना सब करो अब लो. Minus mb cos 60. Cos 60 is 1 by 2 minus इसका फॉर्मूला क्या है? Minus mb cos 0 is 1. So कितना mb minus mb by 2. To calculate m magnetic moment is directly given 3 into magnetic field how much? 0.34 into 10 power of minus 4 by 2. So solve किया तो you'll get 5.1 into 10 power of minus 5 joules. आया? चलो. So these are the things in the analog ये पूरा. Analog done. And before they used to have earth magnetism बोल के, but they removed earth magnetism completely. Okay. Now we have to study. Our intention is to study the properties of magnetic materials. Okay. First, initially some properties, some terminologies we will learn. Then we'll enter into para, dia, ferro. Dia, para, and ferro. खत्म हो जाएगा chapter. Okay. So two more classes में maximum we'll try to finish the chapter. चलो. Introduction to atomic dipoles. So आपको थोड़ा before knowing this कौन सा terminologies, we have to know about dipoles के बारे में learn करेंगे कैसे dipole. Then only we can know the properties. Okay. Atomic dipoles मालूम है ना? Any idea? Atomic dipoles meaning क्या है? Atomic dipoles. आंसर जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ना? बोलो. Atomic dipole. केमिस्ट्री में सीखा होगा ना? केमिस्ट्री में. हाँ. ओके, विल सी. एटॉमिक डाइपोल में एटम से डाइपोल क्यों आएगा, कैसा आएगा, विल सी. डाइपोल मींस टू पोल्स रहने का, नॉर्थ पोल साउथ पोल. एटम में कैसा आएगा, नॉर्थ पोल कैसा साउथ पोल, विल सी. चलो देखो, वी ऑल नो दैट मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. एनी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स. Now, when electron revolves around the nucleus of an atom, it constitutes a current loop, right? When the electron is revolving around the nucleus, this is the nucleus, electron is revolving, मान लो electron is rotating like this. Definitely the current will be flowing in the opposite direction. देखो current आ गया. Whenever electron is revolving, zoom zoom electron nucleus के surrounding rotate कर रहे हैं, उसका opposite direction में current is flowing. Now this current loop behave like a magnetic dipole, right? Whenever there is a current carrying wire, there is a magnetic field. That means it has two poles, north pole, south pole. That means each atom will behave like a magnetic moment. And a formula मालूम है ना, IA पर current carrying wire का, IA. And direction कैसा आएगा? Curl the fingers in the direction of current and thumb indicate direction of magnetic moment. So magnetic moment का symbol है, if I take like this, देखो एक कॉइल ऐसा है, इस फ्रेम में ऐसा. ओके, सो
मान लो द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैसा आएगा? कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट. सो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन इज अपवर्ड्स. That means each atom is behaving like a atomic, it has a dipole, that is called atomic dipole. एक एक atom का वजह से dipole रहेगा, that is called atomic dipole, and each is having magnetic moment. Okay, magnetic moment in the same from south to north, right? Magnetic moment is always from south to north, and this is called as atomic dipole. Atomic dipole. Okay, now आपको this magnetic moment क्यों आया? Orbital motion of electrons, right? Now magnetic moment, it is not only orbital motion of electron का वजह से आएगा, in different cases में भी, different scenarios में भी magnetic moment रहेगा. देखो, the magnetic moment of atom is due to orbital motion of electron, which we studied now, or movement of the electron. Now electron कैसे घूमेगा? Electron will rotate normally like this, or अपने आप spin करके जाएगा. Which how it will go? Electron like earth जैसा only, it will rotate about this axis and it will go around the things. मतलब देखो, spin motion of electrons के वजह से also magnetic moment will be there, and magnetic moment of the nucleus also. मतलब nucleus में we have protons and neutrons. Protons and neutrons are also not constant, that is also moving around the nucleus में. मतलब inside the nucleus only it will be rotating, movement will be there. उसके वजह से also magnetic moment will be there. Okay, so देखो, protons and neutrons are made up of quarks बोल के आपको हायर क्लास में आएगा, quarks बोल के. ओके, वो quarks particles movement की वजह से protons also moving, so उसके वजह से the magnetic moment will be there. Okay, but one is only the major contribution of magnetic moment of the atom, so we are considering only this one in our portion में. We are considering orbital motion of electron के वजह से only major factor, the magnetic moment will be 99.9% will be there because of this one, and less than 1% वाला ये वाला. इस मैग्नेटिक मूवमेंट का नॉलेज यूज करके वी हैव टू नो अबाउट डाया, पैरा एंड फेरो मैग्नेटिक मूवमेंट का, व्हिच यू ऑलरेडी नो. व्हाट इज मीनिंग ऑफ डायमैग्नेटिज्म? मींस कॉज ऑफ डाया, पैरा एंड फेरो. मतलब इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट टर्म्स में केमिकल में डाया, पैरा एंड फेरो. केमिस्ट्री में हो गया ना चैप्टर. इलेक्ट्रॉन्स आर पेड, नॉट पेड. इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन लिखना आता है ना, 1s2 2s2 ऐसा कॉन्फिगरेशन में, ऐसा ऑर्बिटल लगाता था, ये स्पिन मोशन की वजह से ऐसा लगाता था ना ये वाला. सो दिस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में पेयर्ड रहेगा इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड रहेगा? Paired. पेयर्ड. देखो, इन सर्टेन मटेरियल्स all electrons are paired. The magnetic moment of paired electron cancel each other and net magnetic moment is zero. Some materials में, suppose if I see the orbital, this box is nothing but orbital. Orbital में एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, सो इट विल बी स्पिन की वजह से मैग्नेटिक मोमेंट इज अपवर्ड्स एंड अदर मैग्नेटिक मोमेंट इज डाउनवर्ड्स. सो नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन द ऑर्बिटल is 0. Net magnetic moment is 0. So there are no atomic dipoles. No atomic dipoles. That material is called as a diamagnetic substance. हम लोग लास्ट में देखेंगे प्रॉपर्टीज पूरा लिखेंगे, बट अंडरस्टैंड मैग्नेटिक मूवमेंट का बेस में बट अंडरस्टैंड नो एटॉमिक डाइपोल्स इज नथिंग बट
dia. And in other, electrons are unpaired. Some material में electrons are unpaired. So net magnetic moment is not zero. So that means देखो एक ही moment रहेगा. So उसमें उस material में the magnetic moment is not equal to zero. Such materials are nothing but para and ferro. We will see उसका properties क्या है, इसका properties क्या है वगैरह वगैरह. We will see. So इसमें क्या है? Atomic dipoles will be there. Yes, atomic dipoles exist. So atomic dipoles नहीं है तो no atomic dipoles में atomic dipoles are there means it can be para and ferro. Okay. So suppose मान लो if I take a material which has dipoles, एक एटम में वन डाइपोल तो रहेगा कंपल्सरी. इलेक्ट्रॉन घूमना एक एटम इफ आई टेक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम कोई भी ले लो, कोई भी एटम ले लो, एटम एक एटम की वजह से वन डाइपोल विल बी देयर. इफ आई टेक वन सैंपल ऑफ मटेरियल which has that atomic dipoles, how many magnetic moments will be there? How many magnetic moments will be there if I take one sample of material? So many magnetic moments will be there. One is तरफ है, one is तरफ, one is तरफ. Based on electron के direction के वजह से the magnetic moments will be different, right? So लिखो consider sample of material. देखो ये sample है, एक एक dipole का we are putting arrows like this. Each one will is acting like a tiny magnets only. These are देखो, these are acting like north pole, south pole, north pole, south pole. ये different direction में magnetic moments are different direction पे because electron spin is different. Okay, उसके वजह से the north pole, south pole magnetic moments will be different. Now क्या है? It is initially randomly oriented, right? इसमें कितना होगा net magnetic moment? If I see vectorially, ए भी जीरो हो जाएगा बिकॉज ए वाला एंड ए वाला कैंसिल हो जाएगा, ए वाला एंड ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा. दैट मैग्नेटिक मोमेंट विल बी जीरो. इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द मैग्नेटिक मोमेंट्स आर रैंडमली ओरिएंटेड एंड नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज स्टिल जीरो. डाया तो प्रॉब्लम नहीं है पूरा, देयर इज नो डाइपोल्स. बट इवन दो इफ आई टेक ए सैंपल ऑफ मटेरियल then also net magnetic moment is becoming zero even though the dipoles are exist. Why? Vectorially addition किया तो dipole zero हो जा रहा है. Net magnetic moment is getting zero in the absence of magnetic field. Now we are applying magnetic field. Suppose एक iron material like given to you, I want to make that iron magnet, then what will do? आयरन को मैग्नेट बनाने के लिए क्या करेगा? Place it in a magnetic field. हाँ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखेगा. मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या होगा? और वी कैन टेक ए बार मैट, हम लोग इधर से रब करते जाएंगे, सर रब करते जाएगा. लगाने से क्या होगा? आफ्टर सर्टेन टाइम के बाद इट विल बिकम मैग्नेट. व्हाई विल मैग्नेट बिकम्स मैग्नेट? ऐसे ऐसे करने से Because the atomic dipoles align. atomic dipoles, initially every material has atomic dipoles, right? इधर उधर घूमेगा, right? When I apply external field like this, all dipoles will be aligned in the direction of the magnetic field. Okay, उसके वजह से the piece will become a magnet. मतलब arrows पूरा इस तरफ है तो क्या होगा? Suppose मान लो, देखो in the presence of external magnetic field, देखो all dipoles will be aligned in this direction. I am applying external field like this. That's why this will behave like a magnet. This sample of piece will behave like magnet because this is south pole, because south. This is north. So this piece will behave like a magnet because of alignment of the dipoles की वजह से. So here net magnetic moment is not zero.
अभी अलाइनमेंट मोर आने के लिए, मोर अलाइनमेंट होने के लिए what parameters we have to change? More, it has millions of dipoles, right? Not only here I'm showed less, but millions of dipoles. All आपको alignment होने के लिए stronger the magnetic field is required, right? One more parameter where the dipoles will align. If that parameter is high, the dipoles will not align. That is temperature. Low temperature should be there. In that direction only, because ज्यादा टेम्परेचर में क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट इधर इधर उधर होता रहेगा, इट विल नॉट अलाइन. Okay, now वो भी लिखो. The alignment of magnetic dipole is more at stronger magnetic field and low temperature. Stronger external magnetic field को H बोलते हैं. We'll see that what is happening बोल के आगे we'll see. Low temperature आएगा. कितना ज्यादा magnetic field external field लगाएगा उतना dipoles will align and low temperature should be there. इसके बाद only terminologies will be there. वो हम लोग next class में करने वाला है. And terminologies only आपको थोड़ा difficult होगा because in that में Chinese language will be there little bit. Susceptibility, all are same जैसे लगेगा.